মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ৰিনাছ অনলাইন টিচিঙলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ 6 নম্বৰ পাঠৰ চাই আছাম কি এক পহচান, চাহ অসমৰ এক পৰিচয় এই পাঠটি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টি মন দি চাবা আৰু শেষলৈকে চাবা আৰু এই পাঠটি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু মোৰ এই চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা যাতে তোমালোকে মোৰ সকলো ভিডিঅ' সময়মতে পাই থাকা। তেতিয়াহ'লে আহাচোন আমি পাঠটোত কি আছে আলোচনা কৰোঁ। चाय असम की एक पहचान, साह অসমৰ এক পৰিচয়। पक्की सड़क के बीच से होती हुई गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पका रास्तार মাজেৰে गाड़ी लाहे लाहे आगबाढ़ी गई आसिल। दोनों ओर के हरे हरे पत्तों वाले पौधों को देखकर शबनम और रोहन खुशी से उछल पड़े। रास्तार दुयो पारे থকা সেউজীয়া সেউজীয়া গছবিলাকক দেখি शबनम और रोहन आनंदत मतलिया হৈ পৰিছিলে। क्योंकि पहली बार उन लोगों को ऐसा दृश्य देखने को मिला था। कारण कियनो प्रथमबाৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য দেখা পাইছিলে। दोनों को ऐसा लगा मानो हरियाली उन लोगों को सामने बुला रही है। দুয়ো কেনেকুৱা লাগিছিলে যেন এই সেউজীয়াবিলাকে যেন তেওঁলোকক ওচৰলৈ মাতিছে। गाड़ी धीरे धीरे एक चौराहे पर रुक गई और गाड़ीখন लाहे लाहे এটা চাৰিআলিত ৰৈ গৈছিল। जहाँ लोगों की भीड़ खड़ी थी, য'ত মানুহৰ এটা জুম থিয় হৈ আছিল। शबनम पिताजी से बोल उठी। शबनमे देवताকক কৈ উঠিলে, पिताजी वहाँ क्यों भीड़ लगी हुई है? यात क्यों भीड़ लगी আছে? शबनम के सवालों का जवाब देते हुए पिताजी बोले। शबनমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ দেউতাকে ক'লে, वहाँ झूमर नृत्य चल रहा है। তাত झूमर नृत्य চলি আছে। इसलिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। আৰু সেইকাৰণে তাত মানুহৰ ভিৰ লাগি আছে। इसी बीच झूमर का सुमधुर गाना उन लोगों को सुनाई पड़ा। আৰু ইয়াৰ মাজতে তেওঁলোকে ঝুমুৰৰ এটা সুমধুৰ কলি বা ৰাগ তেওঁলোকে শুনিবলৈ পালে। আসাম মাৰলে হামৰাও মাৰব, কোনো ভুল নাই ৰে, জীৱন মৰণ আসাম, সোনাৰ আসাম দেশ ৰে। এনেদৰে তেওঁলোকে এটা খুব ধুনীয়া ঝুমুৰৰ राग শুনিবলৈ पाले। गाना सुनकर उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वे गाड़ी से उतर पड़े। আৰু গানা শুনি তেওঁলোকে গমেই নাপালে যে কেতিয়ানো তেওঁলোকে গাড়ীৰ পৰা নামিলে। दोनों झुमुर देखने लगे আৰু দুয়োগৰাকীয়ে ঝুমুৰ নাচি থকা দলটোক চাবলৈ লাগি গ'ল। इसी बीच पिताजी बोल उठे। আৰু ইয়াৰ মাজতে দেউতাকে কৈ উঠিলে, चलो उस दुकान में हम चाय पीते हैं। बोला সেই দোকানখনত আমি চাহ খাই লওঁ। सभी दुकान में बैठ गए और সকলোৱে আহি দোকানখনত বহিল। चाय की चुस्की लेकर शबनम बोल पड़ी और চাহৰ এটা খোখা মাৰিয়ে शबनमे কৈ উঠিলে, वाह पिताजी, यहाँ की चाय का स्वाद ही कुछ निराला है। वाह देउता, ইয়াৰ চাহৰ যি সোৱাদ, এই সোৱাদ কিবা বেলেগ ধৰণৰ। आप पीकर देखिए ना पिताजी, আপুনি এবাৰ খাই চাওকচোন। चाय के कप पर मुख रखकर पिताजी बोलने लगे। और चाहर कपत मुख रखी देवताकेও ক'বলৈ ধৰিলে, हाँ হয়, चाय तो बहुत अच्छी बनी है, चाह बहुत धुनिया बनिছে। इसकी खुशबू भी बढ़िया है। और ইয়াৰ যি সুগন্ধ, সেই সুগন্ধ খুব ধুনীয়া। यो चाय हमारे आसाम की है। और এই চাহ আমাৰ অসমৰ। यो हमारे आसाम की एक पहचान है। और এই চাহ হৈছে আমাৰ অসমৰ এক পৰিচয়। आते समय सड़क के दोनों ओर तुम लोग जो हरे हरे पत्तों वाले पौधे देखते हुए आए हो, यो वही चाय है। আহি থকাৰ সময়ত তোমালোকে ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে যিবিলাক সেউজীয়া সেউজীয়া গছ দেখা পাইছিলা, সেই সেউজীয়া সেউজীয়া গছৰ পৰা এই চাহসমূহ বনোৱা হয়। जो हम लोग पी रहे हैं, যিবিলাক আমি এতিয়া পি আছোঁ। चलो देर हो रही है। बोला তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেৰি হৈছে। वे लोग फिर रवाना हुए। তেওঁলোক পুনৰ যাবলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গাড়ী চল পৰি, গাড়ী আগবাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে। গাড়ী কি গতি ধীৰে ধীৰে बढ़ने लगी। গাড়ীৰ গতি লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। बातों बातों में रोहन ने पिताजी से पूछा। আৰু কথাই কথাই रोहने দেউতাকক সুধিলে, पिताजी इन हरे हरे पत्तों से चाय कैसे बनती है? এনেকুৱা সেউজীয়া সেউজীয়া পাতাৰ পৰা চাহ কেনেকৈ নহয়? हाँ, तुमने यो बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देवताके ক'লে, তুমি बहुत ধুনীয়া প্ৰশ্ন এটা কৰিলা। सुनो, चाय के बगीचे से पहले हरे हरे कोमल पत्ते तोड़े जाते हैं। তেতিয়াহ'লে শুনা, চাহ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে বাগিচাৰ পৰা কোমল কোমল
সেউজীয়া সেউজীয়া পাতসমূহ ছিঙি লোৱা হয়। এটি কলি দুটি পাত বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ এটা কলি থাকে আৰু দুটা পাত থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আগ সেই চাহ গছৰ আগসমূহ ছিঙি লোৱা হয়। ইও কাম চাই মজদুৰ লোক কৰতে হে, আৰু এই কামটো সাধাৰণতে চাহ মজদুৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকেই কৰে। ইতনে মে শবনম খুশি সে চিল্লা উঠি, আৰু এই কথা কোৱাৰ লগে লগে শবনমে চিঞৰি উঠিলে, अरे भैया देखो तो वे महिलाएं एक साथ चाय की कोमल पत्तियां तोड़ रही है। ভাইটি চোৱাচোন, এই মহিলাসকলে চাহ বাগানত চাহৰ কোমল কোমল পাতসমূহ ছিঙি আছে। কিতনি अच्छी लग रही है, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। हाँ हाँ वे बहुत अच्छी लग रही है, रोहन बोल पड़ा। रोहने लगे लगे কৈ उठिले, बहुत धुनिया লাগিছে তেওঁলোকক। पिताजी दोनों की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, আৰু দেউতাকে দুয়োৰে কথা আগবঢ়াবৰ কাৰণে ক'বলৈ ধৰিলে। साधारणत चाय बगीचों में पत्ते तोड़ने का काम ज़्यादातर महिलाएं करती है। সাধাৰণতে চাহ বাগিচাত পাত ছিঙা কামটো মহিলাসকলে কৰে। इसके बाद पत्तों को CTC मशीन पर दिया जाता है। ইয়াৰ পাছত এই পাতসমূহ CTC মেচিনত দিয়া হয়। इस तरह मशीन से कई प्रकार की चाय निकाली जाती है, আৰু তাৰ পাছত CTC মেচিনৰ পৰা কেইবা প্ৰকাৰৰো चाह तैयार करा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जोरहाट के टोकलाई में विश्व का प्रथम और एशिया का सबसे बड़ा चाय का रिसर्च सेंटर टोकलाई टी रिसर्च सेंटर अवस्थित है। और आमार यार परा अलप दूरत जोरहाटर टोकलाइट विश्वर प्रथम और एशियार सकलोतকৈ डाঙৰ रिसर्च सेंटर चाहर रिसर्च सेंटर चाह का रिसर्च सेंटर टोकलाई टी रिसर्च सेंटर अवस्थित है। टोकलाई चाह गवेषणा केंद्र अवस्थित। मौका मिले तो हम कभी इसे देख लेंगे, और सुविधा पाले आमी केतियाबा टोकलाइले जाम और चाय आहिमगৈ। शबनम पिताजी की सारी बातें सुन रही थी, और शबनमे देवताकर सकलो कथा शुनी आसिल। वो बल पड़ी, ताई लगे लगे কৈ उठिले, पिताजी हमारे असम में चाय की शुरुआत कब और कैसे हुई, थोड़ा सा बताइए ना। लगे लगे शबनमे देवताকক কৈ उठिले जे देवता আমাৰ অসমত তেতিয়াহ'লে চাহৰ শুভাৰম্ভ কেতিয়া আৰু কেনেকৈ হ'ল অকণমান ক'বানে। शबनम के आग्रहपूर्ण सवाल का उत्तर देते हुए पिताजी कहने लगा। शबनমৰ आग्रहपूर्ण जी प्रश्न সেই प्रश्नर उत्तर दिबले गई देवताके ক'বলৈ ধৰিলে, धान की खेती की भांति चाय की खेती की शुरुआत भी सबसे पहले चीन में हुई। धान खेतीर जेनेके आरम्भ গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত চীন দেশত প্ৰথমতে হৈছিলে, ঠিক তেনেকৈ চাহৰ খেতিৰ শুভাৰম্ভও চীন দেশতে হৈছিলে। चीन के बाद भारत, श्रीलंका, जापान आदि विश्व के कई देशों में धीरे धीरे इसकी शुरुआत होने लगी। चीन देशर पिछते भारत, श्रीलंका, जापान आदि विश्वर विभिन्न देशर लाहे लाहे यार शुभारम्भ হ'বলৈ ধৰে। চাই শব্দ চীন দেশ से आया है, और চাই जी शब्द চাহ এই শব্দটো চীন দেশৰ পৰা আহিছে। वहाँ चाय को चाह बोला जाता है। চীন देशत চাহক চাহ বুলি কোৱা হয়। अंग्रेजी में इसका प्रतिशब्द है टी, और इंग्राजी यार प्रतिशब्द হৈছে टी, TEA टी। सिंफो जनजाति चाय को फिनाप अथवा फालाप नाम से जानते थे, और सिंफो जनजाति लोकসকলে চাহক ফিনাপ অথবা ফালাপ বুলি জানিছিলে, তেওঁলোকে চাহৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আহোম লোক চাय को नाम फालाप शब्द से जानते थे, আৰু আহোমসকলে চাহক নাম ফালাপ বুলি জানিছিলে। তেওঁলোকে চাহ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কিন্তু ব্যৱসায় ভিত্তিক এই চাহৰ কোনো ধৰণৰ উৎপাদন কৰা নাছিলে। মাত্ৰ তেওঁলোকে এই চাহৰ যি ৰং সেই ৰং ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে এটা পানীয় হিচাপে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিছিলে, কিন্তু ব্যৱসায়িকভাৱে এই যি ফানাপ বা ফালাপ তেওঁলোকে উৎপাদন কৰা নাছিলে। নাম কা মতলব হে পানী और फालाप का मतलब है चाय, और ইয়াত নামৰ শব্দ হৈছে যেটো আহোম শব্দ নাম ফালাপ, ইয়াত নাম মানে হৈছে পানী আৰু ফালাপ মানে হৈছে চাহ, অৰ্থাৎ চাহৰ পানী। इस प्रकार दोनों के मिलने पर अर्थ हुआ चाय पानी, আৰু ইয়াৰ এনেদৰে এই দুটা শব্দ লগ লাগি অৰ্থ হৈছে চাহ পানী। 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मेजर ब्रूस साहब को सिंफो के राजा ने, और 1823 सनत ईस्ट इंडिया कोम्पानीर एजेंट आছিলে मेजर ब्रूस साहब, और सिंफो रजाई
चाय के 2 पौधे भेंट किए थे। তেওঁ দুটা চাহ গছৰ দুটা পুলি তেওঁ মানে উপঢৌকন হিচাপে দিছিলে। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस साहब ने आसाम में चाय की खोज की। তাৰ পিছতে ৰবাৰ্ট ব্ৰুছ সাহাবে এই যি চাহ সেই চাহৰ মানে বিষয়ে অসমত विचार खुचार কৰিবলৈ ধৰিলে। इस काम में असम के प्रथम चाय कृषक मणिराम देवान ने भी उनकी मदद की थी। আৰু এই কামটো কৰিবলৈ তেওঁক অসমৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত ব্যৱসায়িক কৃষক মণিৰাম দেৱানে তেওঁক সহায় কৰিছিলে। इस तरह रॉबर्ट ब्रूस साहब की खोज से ही आसाम में चाय की खेती का श्रीगणेश हुआ था। আৰু এনেদৰেই ৰবাৰ্ট ব্ৰুছ সাহাবৰ চাহ খেতিৰ যি বিচাৰ খুচাৰ সেই বিচাৰ খুচাৰৰ পিছৰ পৰাই অসমত চাহ খেতিৰ শ্ৰীগণেশ হৈছিলে, অৰ্থাৎ শুভাৰম্ভ হৈছিলে। পিতাজী कहते गए, পিতাজীয়ে কৈ গ'ল 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पहली बार आसाम में चाय की खेती की शुरुआत की। 1839 চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত চাহ খেতিৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল। इसके बाद भारत के अन्य राज्यों में भी चाय की खेती की शुरुआत धीरे धीरे होने लगे। আৰু ইয়াৰ পিছত ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ বাহিৰত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত চাহৰ খেতি লাহে লাহে কৰিবলৈ ধৰিছিলে। আসাম का पहला चाय बगीचा है। আৰু অসমৰ প্ৰথম চাহ বাগিচা হৈছে চাবুৱা চাय बगीचा, চাবুৱা চাহ বাগিচা। इसी बीच रोहन फिर बोल उठी। আৰু ইয়াৰ মাজতে रोहने पुनर কৈ उठिले, पिताजी ये वही मणिराम देवान है ना जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना जीवन निछावर किया था। देवता এইগৰাকী মণিৰাম দেৱানেই হয়নে যিজনে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নিজৰ জীৱন মানে ত্যাগ কৰিছিলে, শ্বহীদ হৈছিলে। हाँ हाँ वे ही है। देवताके ক'লে हाँ हाँ তেওঁৱেই হয়। वे हमारे आसाम के प्रथम चाय कृषक ही नहीं बल्कि देश प्रेमी भी थे। তেওঁ আমাৰ অসমৰ কেৱল একমাত্ৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়কে নহয়, তেওঁ এগৰাকী দেশপ্ৰেমীও আছিল। उन्होंने 1853 में आसाम में 2 चाय बगीचे स्थापित किए थे। তেখেতে 1853 চনত অসমত দুখনকৈ চাহ বাগিচা স্থাপনা কৰিছিল। পহলা চীনামাৰা চাय বাগিচা আৰু দুসৰা চেলেং চাय বাগিচা। প্ৰথমখন চীনামাৰা চাহ বাগিচা আৰু দ্বিতীয়খন চেলেং চাহ বাগিচা। इन दोनों बगीचों के कारण वे एक मशहूर चाय कृषक के रूप में जाने जाते हैं। আৰু এই দুখন বাগিচাৰ কাৰণেই তেখেতক অসমৰ বিখ্যাত চাহ খেতিয়ক হিচাপে জনা যায়। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी फिर रोक दी। আৰু ইয়াৰ মাজতে ড্ৰাইভাৰগৰাকীয়ে পুনৰ গাড়ীখন ৰখি দিলে। क्योंकि दोनों को बहुत भूख लगी थी, কাৰণ দুয়োগৰাকীক বহুত ভোক লাগিছিলে। इस समय दिन के 2 बज रहे थे। আৰু এইখিনি সময়ত দিনৰ 2টা বাজিছিলে। सबने भोजन किया, সকলোৱে মিলি দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে। গাড়ী নে ফিৰ গতি লি, তাৰ পাছত গাড়ীখনে পুনৰ গতি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। पिताजी फिर बोलने लगे। देवताके पुनर ক'বলৈ ধৰিলে, हमारे आसाम में छोटे बड़े कई चाय बगीचे हैं। আমাৰ অসমত সৰু ডাঙৰ বহুতো চাহ বাগিচা আছে। 2001 के आंकड़ों के अनुसार हमारे आसाम में लगभग 2500 छोटे चाय बगीचे हैं। 2001 চনৰ হিচাপ অনুসৰি আমাৰ অসমত অতি কমেও 2500 চাহ বাগিচা, সৰু ডাঙৰ 2500 চাহ বাগিচা আছে। ज़्यादातर चाय बगीचे ऊपरी आसाम में स्थित है। আৰু ইয়াৰে বেছিভাগ চাহ বাগিচা উজনি অসমত অৱস্থিত। पिताजी और कुछ कहना चाहते थे कि रोहन बीच में ही बोल उठा। देवताके আৰু কিবা ক'ব বিচাৰিছিলে, কিন্তু रोहने पुনৰ মাজতে কৈ উঠিলে, पिताजी लोग चाय क्यों पीते हैं? মানুহে কিয় চাহ খায়, চাহ পিয়ে? क्या इसकी कोई उपयोगिता है? ইয়াৰ কিবা উপযোগিতা আছেনে? हाँ क्यों नहीं? দেউতাকে ক'বলৈ ধৰিলে, নিশ্চয় আছে, কিয় নাথাকিব? पिताजी ने उत्तर दिया। পিতাজীয়ে এনেদৰে উত্তৰ দিলে, साधारणत लोग शरीर एवं मन में ताजगी लाने के लिए चाय पीते हैं। সাধাৰণতে মানুহে মনত আৰু শৰীৰত তাজগী মানে হৈছে তাজা বা ফ্ৰেছনেছ আনিবৰ কাৰণে কি কৰে? চাহ পানী খায়। इसके साथ साथ और भी कोई वजह है। ইয়াৰ উপৰি আৰু বহুতো কাৰণ আছে, जिनके कारण लोग चाय पीते हैं, যাৰ কাৰণে মানুহে চাহ
सेवन करे। वैज्ञानिकों के अनुसार चाय पीने से फेफड़ों के रोग, कैंसर, हैजा, टाइफॉइड आदि रोग होने की संभावना कम होती है। और বৈজ্ঞানিকসকলে ক'ব বিচাৰে যে চাহ পানী খোৱাৰ ফলত মানুহৰ বিভিন্ন ৰোগ যেনে কেঞ্চাৰ, হাইজা, টাইফয়েড আদি ৰোগ হোৱাৰ পৰা মানুহ মানে আঁতৰত থাকিব পাৰে। पिताजी ने आगे कहा, पिताजी पुनः कबले धरिले, भारतवर्ष के ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं और विश्व में भी इसकी बहुत मांग है। भारतवर्षर बेसिभाग मानुहे पानीय हिसापे चाह सेवन करे और गोटे विश्वते मानुहे चाह सेवन करे। जिन देशों के पास चाय नहीं है वे अन्य देशों से इसका आयात करते हैं। और যিবিলাক দেশত নিজৰ উৎপাদিত চাহ নাই তেওঁলোকে বেলেগ দেশৰ পৰা চাহৰ আমদানি কৰে। आयात माने হৈছে আমদানি। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय असम में ही होती है और विश्वर সকলোতকৈ বেছি চাহ उत्पादन অসমতে হয়। क्योंकि यहाँ की मिट्टी चाय खेती के लिए बहुत उपयोगी है। कियनो অসমৰ माटी चाह खेतिर बाबे उपयोगी। असम की चाय की विश्व बाजार में एक अलग पहचान है। और অসমৰ जी चाह है चाहर गोटे विश्व बाजारत एक बेलेग परिचय आसे। कहा जाता है कि चाय के कारण ही अंग्रेज़ों ने असम में पहली बार 1885 में रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था की थी। और हुआ है जे चाहर खेतिर कारणे ब्रिटिशসকলে 1885 सनत অসমত रेलगाड़ीर व्यवस्था কৰিছিলে। इस तरह देखा जाता है कि हमारा आसाम चाय के लिए ही आज विश्व में प्रसिद्ध है। और এইদৰে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে আমাৰ অসমখন বিশ্বৰ সন্মুখত চাহৰ কাৰণে विख्यात। ऐसे ही गपशप करते करते वे लोग शिवसागर पहुँच गए। और এনেদৰেই তেওঁলোকে কথা বতৰা পাতি পাতি কেতিয়ানো শিৱসাগৰ পালে তেওঁলোকে গমেই নাপালে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই পাঠটিত তোমালোকে চাহ অসমৰ এক পৰিচয় এই বিষয়ে থুলমূলকৈ জানিলা। গতিকে আমি এই পাঠটোৰ পৰা গম পালোঁ যে অসম কেনেকৈ বিশ্বৰ সন্মুখত আজি বিখ্যাত হৈ পৰিছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক পুনৰ বেলেগ এটা ক্লাছত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে মই তোমালোকক ইয়াতে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ। টেক কেয়াৰ।